एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पार्क ब्यूटी। आज हमने उर्वशी रौतेला का ये खूबसूरत सा मेकअप ट्राई किया है। मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया है ये ब्यूटीफुल ज्वेलरी टू इन्हांस द लुक। मैंने काफ़ी मेहनत से ये लुक पुल आउट किया है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। आई एम यूजिंग लैक्मे पीच मिल्क फॉर मॉइस्चराइजिंग माई स्किन। मेकअप से पहले मॉइस्चराइज ज़रूर कर लें। नाउ वी आर यूजिंग स्विस ब्यूटी प्राइमर। फाउंडेशन से पहले प्राइमर ज़रूर लगाएं। Now I'm using sugar foundation for high coverage. This one is my favorite. This gives a really flawless look and it feels like a flawless skin. So blend it well. Because blending is the key. Now I am concealing my eyes using Swiss Beauty concealer. I am using a brush to conceal it. Now finishing the base with Wet n Wild Compact. Now doing my eyebrows using brown kajal. As you can use brown kajal as your eyebrow filler. So yeah. Now applying the eyeshadow. It's a kind of pink shade. Not exactly pink, but yeah, in a pink tone. So blend it well. Now applying concealer to add some shimmery eyeshadow over it. कंसीलर के ऊपर अब हम लगाएंगे इसके ऊपर पिंक शिमर शेड। इससे आईज बहुत वाइड एंड ब्यूटीफुल लगती है। इसको थोड़ा लाइटर शेड यूज कर रही हूँ, लाइट शिमर पिंक शेड। सो नाउ आई एम फिनिशिंग द लुक विद द आईलाइनर। आई एम गिविंग इट अ विंग्ड आईलाइनर लुक। Hyper curl mascara. This will give volume to lashes. Now contouring it using Wet n Wild contouring palette. I like this palette. You can get it at very reasonable price. Now I am using Master Chrome highlighter from Urvashi. Now applying it on my cheekbone and on my nose. Now I am using Maybelline blush. This blush is very much pigmented. Now I am lining my outer lip corners. I hope आपको ये लुक अच्छा लगा हो and if you like the video, subscribe to our channel and comment करना ना भूलें. Thank you so much for watching.